Right. So we are starting with the new session, and it is for economics optional as well as for the Indian Economic Service and RBI DPR. I will explain what is common and what is the differences between these three different courses and how we can have an integrated class as well as differentiated class. What will be the approach? That is, in this first session we'll simply briefly explain the course content of all three. Most of it is overlapping. एक सेपरेट डिस्कशन वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वो लेक्चर 1 के फॉर्म में आप देख सकते हैं, इन विच आई हैव डिटेल एक्सप्लेन द इन डिटेल ऑप्शनल कंटेंट एंड द अप्रोच, economic service content and the approach, and RBI content and the approach. Now first beginning with this part, say in terms of the number of lecture and the orientation, first two exam, that is civil service and then economic service, will be taken by the UPSC. So I will show the question what is the common between, same question भी repeat हो रहा है as word to word. So economic service and economics optional. To begin with, first just brief content for optional. In paper 1 there will be 5 subpart. So your paper 1, as you know, it divided into 5 subpart. We'll start with the first one, which is micro. So paper 1 is basically having 5 parts. One is a advanced micro, second will be advanced macroeconomics, third is money, banking and finance. Usually these three constitute section A of paper 1, micro, macro and money, banking and finance, section A of paper 1. And then international economics, major section, and growth and development, 5 subunit within paper 1. पेपर 1 के अंदर ये 5 सब यूनिट है. नाउ विद इन माइक्रो देयर आर 4 पार्ट्स. ठीक है, डिटेल आपको साइट पे भी मिल जाएगा, सिलेबस का डिस्क्रिप्शन है. विद इन माइक्रो देयर विल बी 4 पार्ट्स रिटन: मार्शिलियन एंड वॉल्यूशन अप्रोच, अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स. 4 पार्ट्स रिटन. What is not written? Consumer theory. So generally they are not asking question from consumer theory also. Past का पूरा ट्रेंड अगर आप लास्ट 15-20 years के क्वेश्चन देख लो, you will not find a single question core from consumer theory. Except 1 year it was backward bending labor supply curve, but that can be considered as part of distribution, not as a part of consumer theory question. तो कोर कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता, बट दिस डज नॉट मीन कि हमें कोर कंज्यूमर थ्योरी का बेसिक नहीं मालूम होना चाहिए. वी मस्ट नो द बेसिक ऑफ इट. व्हाट इज बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सो ऑन. वी मस्ट बी नोइंग इट. ऑल द क्वेश्चन आए एंड आए. सिमिलरली व्हाट इज नॉट रिटन इज द प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. और अगेन क्वेश्चन में पेपर में भी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. इन 1 year 2017 देयर वाज वन क्वेश्चन. इट वाज derive expansion path for the Cobb-Douglas production function. So that one question we can say asked from the production topic. So there is always some written part of the syllabus, some unwritten part of the syllabus. Like for example, if you start in the micro, the major content is market structure. The market structure, they have written only 3 words: monopolistic, duopoly, oligopoly. Now within oligopoly, what? We have to interpret it through the question paper. Perfect competition is not mentioned, monopoly is not mentioned in the syllabus, but there are questions from perfect competition as well as from monopoly. Market failure not directly mentioned in the syllabus, but question is from the market failure as well. So we have to interpret the syllabus through question paper. So your first work will be basically to see the detailed question paper. Like for example, in the micro, we have segregated all topic wise question. So starting with the market structure, main content, how many को ये 2024 लास्ट पेपर से पूरा इंक्लूडेड है. लास्ट 20 जब तक के क्वेश्चन अवेलेबल है, यू विल फाइंड ऑल.
So by seeing those questions, suppose in 2024 we find 1 question, 2 question, 3 question. Again in 2023 you get 1, 2, 3, 4. So on an average 3 to 4 question usually रहते हैं, but 3 to 4 question means about 40 to 50 marks only from market structure section of micro. It is not complete micro, it is only one part of the micro. So we have to interpret the syllabus through question. कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो पता चलेगा, because 60 to 70% of the question usually is always from the PYQ, past question होते हैं. Like for example this question of 2017, this question number 7. Describe the model of oligopoly that explains price stickiness. Yeah. So just wait. External measure of R. You can see this question. Question number 7. Describe model of oligopoly that explains price stickiness. ये पॉल सूरी का जो मॉडल है प्राइस स्टिकनेस और प्राइस रिजिडिटी के फॉर्म में आई थिंक 8 to 9 टाइम्स ऑलरेडी ये पास्ट ईयर में है. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, ऑलरेडी यू विल हैव अ वेल रिटन नोट्स, प्रैक्टिस करके रखना है. क्वेश्चन दोबारा मिल जाए तो एज इट इज लिख देना. इसमें कोई क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. Straight question, direct question. You will always find many direct question. So first of all, we have to interpret the syllabus through question paper. So once you do with the market structures, then similarly we start with the next topic within micro as a welfare. Now from the welfare section, you can see from welfare economics part, in 2023 there was no question, not even in 24. In 22 you get one question, in 21 again you get one question. So on an average 1 or 2 question at the maximum. So weightage of welfare within micro is less as compared to market structure. So the most important topic is going to be the market structure within micro. Clear? So for each and every topic we have segregated the question. I will keep on doing this question every lecture. कि आज के content के basis पे what different question you can attempt. So this is basically one approach for. ठीक है, तो सिलेबस के फॉर्मेट में रखिएगा ये कंटेंट. देन मोस्ट सिलेबस बेसिकली मेंशन्ड है मार्शलियन इवैल्यूएशन अप्रोच, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर क्राइटेरिया. टच नहीं है ऑन ऑफ है. क्लियर? सेकेंड टॉपिक के अंदर भी वही होगा अपना. मेनली इट इज रिटन एज द क्लासिकल एंड ISLM कर्व, but what is significantly missing is inflation, unemployment, Phillips curve, Okun's law, inflation targeting, design of monetary policy, Taylor's rule. सारे सिलेबस के अंदर लिखे ही नहीं है. So it's the topic of inflation and unemployment is missing actually, but there will be regular question coming from that section as well. So again you have to interpret the syllabus through question paper. क्वेश्चन पेपर के थ्रू मुझे इंटरप्रेट करना है सिलेबस को. ये प्रॉब्लम याद रखिएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है कि बहुत डिटेल सिलेबस नहीं होता. ईच एंड एवरी टॉपिक इज नॉट मेंशन, प्लस
nowhere it will be mentioned कि ये टॉपिक आपको कौन से सोर्स से पढ़ना है. तो रिगार्डिंग द सोर्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, basically we have compiled a separate source. For example, we will begin with basically market structure with Kotsanis, and you can also refer to the Chalauja for micro part. Then for macro part, Froen, Donbos Fisher and Blanchard. For money banking and finance, mainly it is H.L. Bhatia, Branson and S.B. Gupta. But किसी बुक को आपको बाय नहीं करना, because you complete बुक आपको नहीं पढ़नी है, selected chapter पढ़ने हैं. So xerox of those chapter will be included in your study material. For one for micro, for macro, for money banking and finance, international and growth and development. So no need to buy any particular book. Even the detailing of further is also mentioned here. Like for example, market structure में कौन से chapter पढ़ने हैं? So chapter number 5 to chapter number 10 and 13 from Kotsanis. Not only this book, only which chapter from that book वो clearly mentioned है for each and every topic. ये PDF आपको मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है. वहां से आप जब कभी बिगिन करेंगे विल जस्ट नोट इट डाउन ऑल्सो. तो रेफरेंसेस आपको सर्च नहीं करने, इस टॉपिक को कहां से पढ़ना है. बाय रेफरिंग टू दोस चैप्टर विल बी कंडक्टिंग द लेक्चर. दैट मीन्स इन योर लेक्चर द क्लास नोट्स के अंदर ये कंटेंट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 टुडे. आप अगर स्टडी मटेरियल से अपने क्लास नोट्स को मैच करेंगे, यू विल फाइंड द सेम सेंटेंस, सेम पैराग्राफ, बट वो बुक है और ये नोट्स हो रहा है. Book may be of 20 pages, notes may be of the 5 or 6 pages. You have to write answer in 2 pages. But what UPSC is expecting, 2 पेज के अंदर जो कंटेंट है वो वही होना चाहिए जो बुक के अंदर है. तो बुक इस लैंग्वेज आपके आंसर में तभी आएगा जब when you prepare your notes from the book, practice it 1 or 2 times and then write it in the examination. Clear? So we will basically start first of all with the market structure topic because it is the most important section. Now regarding the other part, which is a paper 2 will come later of Indian economy. Now you can see that common between what is for Indian economic service, where is that micro section is coming. So micro is basically included in G1 paper. So G1 has 5 parts there. Indian economics 1 will have 5 parts. Consumer demand, production, वो significantly कहाँ पे missing है? Optional में missing है, but यहाँ पे specifically mentioned है. So for that purpose we will have a separate lecture. Theory of value, which is market structure, which will be common. Distribution common, welfare common. So distribution, welfare and market will become common. Consumer demand and production will be separate, and the approach will also be numerical. So we'll have a separate lecture for that purpose. जो common है वो common lecture के अंदर आ जाएंगे. Then even in J3 यहाँ पे 4 section है. Public finance, environmental economics, industrial economics and state and planning. That industrial economics is micro and it is nothing but market structure. तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, बेसिकली यू गेट 1 इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू हियर एंड 1 इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स. तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और थ्योरी ऑफ वैल्यू के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हो जाएगा. इसमें यू कैन सी दैट क्वेश्चन हियर. तो ये इकोनॉमिक सर्विस में भी यही काम किया है. टॉपिक के अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन सेपरेटेड है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू गो स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू. थ्योरी ऑफ वैल्यू इज बेसिकली द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक. फ्रॉम थ्योरी ऑफ वैल्यू जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उस एक जगह से एग्रीगेट किए गए. बट अगेन यू कैन फाइंड और सी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हियर because this is for Indian economic service. From the in the Indian economic service you will get more numerical as compared to the optional. So for theory of value, then for industrial economics, this will become part of general economics 3 paper. बट अगेन जनरल इकोनॉमिक्स 3 के अंदर भी कंटेंट देखेंगे तो यहाँ भी ये मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो रही है. तो बेसिकली इट इज सेम कंटेंट, मार्केट स्ट्रक्चर है जो पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में पूछे जा रहे हैं. सो वी विल बिगिन बेसिकली विद द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक. So for optional it is part of paper 1
and for economic service it is part of two different paper, G1 as well as G3. G1 और 3 दोनों के कंटेंट होंगे, ठीक है. So we can start with approach दोनों में आके सेम होना है. In for each and every topic क्वेश्चन सेपरेटेड होगा. तो हर क्लास के अंदर आई विल कंटिन्यू टू शो द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द सिविल सर्विस एंड दैट हैज बीन आस्क्ड इन द इकोनॉमिक सर्विस. और अगर आप क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस करें इट विल बी ऑलवेज बेटर. इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द सिविल सर्विस यू कैन कंप्लीटली इग्नोर द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, बिकॉज नॉर्मली न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं है, बट एक्सेप्ट 1 or 2 वो क्लास के अंदर कवर हो जाएगा, मेनली फॉर द कॉर्नेट मॉडल, नॉट अदरवाइज. एंड यू कैन रिलेट ऑल्सो विद दिस, like just relate one question. This question in 2015 was, under perfect competition in the short run, find out graphically without using average cost curve condition in equilibrium for the existence of normal profit, supernormal profit and loss. ठीक है, 2015 में सिविल सर्विस के अंदर पूछा गया. एंड सी द सेम क्वेश्चन इन इकोनॉमिक सर्विस एज वेल. क्वेश्चन नंबर 39. Consider the equilibrium of a firm under perfect competition. Find out condition for normal profit, supernormal profit or loss, whichever is applicable for the firm without using average cost curve. तो sentence भी same है, same question as it is. First lecture के अंदर I will basically explain this question. Again, in the civil service, perfect competition is not mentioned, but question has been asked from perfect competition. ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप दोनों रेफरेंस के लिए करें इट विल बी ऑलवेज बेटर. देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो कॉमन है, सेम क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो वो कभी इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन सिविल सर्विस में आ गया, सिविल सर्विस का क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस में आ गया, में हैपन. ठीक है, तो वी कैन बिगिन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल विद द मार्केट स्ट्रक्चर सेक्शन. और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन शोइंग दिस. वी कैन स्टार्ट फर्स्ट विथ द टॉपिक. नाउ यू कैन से जस्ट मेंटेन try to maintain separate spiral for your answer writing. एक स्पाइरल रखना है आंसर राइटिंग के लिए ओनली. उसमें जो भी क्वेश्चन क्लास में शो करेंगे घर जा करके उस क्वेश्चन को मार्क करना है और टू साइड में जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग द आंसर एंड राइट ऑल separate topic. That means for micro you must have a separate spiral, for macro separate, for international economics separate, for growth and development separate, for paper 2 separate. We will have about 5 or 6 spiral I think for the content. Content usually it will take about 5 to 6 months for the optional preparation. तो optional का content over हो जाएगा by year end. Economic service content will go till February end, 2.5 months more, because in that we have to cover about 250 lecture, and there are some specific topic in the economic service, and in the optional about 150 lecture होंगे. तो ऑप्शनल का कंटेंट बाय ईयर एंड हो जाएगा दिसंबर ब्रेक से पहले, और इकोनॉमिक सर्विस का कंटेंट फरवरी एंड में होगा. ठीक है, बट योर कोर्स एंड एवरीथिंग विल बी इकोनॉमिक सर्विस के लिए इट विल बी वैलिड टिल योर एग्जाम ऑफ 2026. ऑप्शनल कंटेंट ओवर हो जाएगा बट योर टेस्ट वैलिडिटी विल कंटिन्यू फॉर अ ईयर. फॉर 1 year you can write all the, and for all the tests you will be basically getting the support in terms of the model answer. जो आंसर आप लिखेंगे वो इवेल्युएट भी होगा, प्लस फ्रॉम माय साइड द आंसर विल बी गिवन इन द रिटन फॉर्मेट आल्सो. ये सारे पीडीएफ आप अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, so what you have to write and how you have to write, that will be explained. We will get to know this information in the first lecture itself. What is the approach? I think we can begin with the content part. So content you can write first, you are doing micro, and within micro market structure.
within micro market structures. So market structure is a part of paper 1 for optional, and it is for Indian Economic Service. It is, you can say, part of GU1 area value, and G3 industrial economics. Area of value and industrial economics. जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो सेपरेट क्लास में अंदर. First thing, we are starting with the micro approach. So in micro approach, what will be the overall approach? In micro, we are studying with the unit. So when I say market structure, we are not specifically studying the entire market. We are studying market for a particular product. Market for a particular product. Product change हो गया तो market change हो जाएगा. The concept of market is product specific. Concept of market is product specific means when I say market structure, then I am referring to what? Market for TV, market for car, market for toothpaste, market for any other product. Product different होने पे market different हो सकता है. So we are not referring to the marketplace where different type of goods are sold. Rather, we are referring to the market where we are dealing with one particular product. Now, for that particular product, if there are large number of sellers, all producing identical product, then you call that market perfectly competitive. If there are large number of sellers, all producing differentiated product, then it is called monopolistic competition. If there is only one seller, we call it monopoly. If there will be two sellers, duopoly. If there are few sellers, oligopoly. तो जो डेफिनेशन मार्केट का कैटेगराइजेशन इट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सेलर. ये नंबर ऑफ सेलर की बात हो रही है. सेलर ऑफ व्हाट? सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. तो सेलर, now that product can be same, that product can be differentiated. So the concept of market, you can say that it is divided into 4 parts. And write it in this form. This concept of market, first thing, it is a product specific concept. It is product specific concept है ये. Product change होने पे market change हो जाएगा. So in your mind you can refer any particular product, and for that particular product, if there is only one seller, then you call that market monopoly. More than one but not large in number, more than one but not large in number, that means there are few sellers in the market, then it will be referred as oligopoly. Oligo means few, mono means one. So monopoly market characterized by a single seller, oligopoly market characterized by few sellers. Like if I say the product is cold drinks, so in the cold drinks market, how many sellers? There are few. Pepsi, Coke mainly dominant. So we can call that market as oligopoly in nature. If there are large number of sellers of the product, all producing slightly differentiated product, like if I say the market for toothpaste, so there are many sellers, but all toothpaste are not identical, they are differentiated. So market for toothpaste is monopolistic in nature. So the market is can be monopolistically competitive. So the question was one year, the question was what is the element of monopoly and what is the element of competition in monopolistic competition. You call that market monopolistically competitive. So there is element of monopoly also, and there is element of competition also. So what is the element of competition and what is the element of monopoly in that monopolistic competition? We'll explain that. If there are large number of sellers, all producing identical product, then it is called as
perfectly competitive, perfect competition. So market structure is basically categorized into four parts: perfect competition, monopolistic, oligopoly, and monopoly. Now, if I give any example of perfect competition market, just try to relate the concept with the real environment. Any example of perfect competition market? Textile. But textile में various categories है. I said the concept of market is product specific. So first choose the product. फिर आपको ये देखना है कि क्या जितनी sellers है, because in the perfect competition market you will have a large number of sellers. There will be many sellers, and the condition is all must be selling the identical product. Means as a buyer you cannot separate between the product produced by one firm and the product produced by the other firm. In the textile there are variations, there are different type of textile. राइस के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, उसमें भी अलग अलग होते हैं. पेपर का जेरोक्स की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, जेरोक्स का मशीन डिफरेंट हो सकता है, पेपर की क्वालिटी डिफरेंस हो सकती है. इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मिथ, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. सो फ्यूटाइल टू फाइंड एनी रियल एग्जांपल, क्योंकि रियल एग्जांपल है ही नहीं. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज बेसिकली अ मिथ. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी इट देन. अगर वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन व्हाई वी स्टडी इट? We study it mainly because all market which exist in reality are imperfect. All market are imperfect, but the degree of imperfection varies. इस मार्केट में कितना imperfection है वो रिलेट करने के लिए एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी तो होना चाहिए जिससे हम रिलेट करेंगे. मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी imperfection है, ओलिगोपोली में भी imperfection है, but there must be a reference point. So we are just imagining a market first of all. If there is a market where there are a large number of sellers all producing identical product, then what will be the outcome? And then try to relate the real example. Okay, in this market, product is not different, product is not identical. There are few firms or one firm or two firm or large number of firms. So how the outcome is different from the perfect competition market? So we will start basically with the perfect competition. That will be the ideal market. Then we will go to oligopoly and then monopolistic. Now, even in the market for monopolistic, I gave the example of toothpaste industry. If I ask what is the nature of car industry in India, कार मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया. I am saying what is the nature of car industry in India? Monopolistic. मोनोपोलिस्टिक है. I said if I'm taking the example of car. Now within car you can say that this is not a single product. इसके अंदर भी वेरिएशन है. स्मॉल कार का सेगमेंट अलग हो गया, लग्जरी कार का सेगमेंट अलग हो जाएगा. तो मर्सिडीज कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द मारुति, सब्स्टिट्यूट नहीं है वो. तो वो अगर इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट डिफरेंट है, और ऐसे प्रोडक्ट डिफरेंट होगा तो मार्केट डिफरेंट हो जाएगी. तो लग्जरी कार का सेगमेंट ओलिगोपोली है, टू सेलर्स. स्मॉल कार के सेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए. प्रोडक्ट डिफरेंट होने पे मार्केट डिफरेंट हो जाएगा. तो आपको ये देखना है कि व्हेन वी आर से मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट वेदर दोस प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर और नॉट. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि दे मस्ट बी टेक्निकल सब्स्टिट्यूट एज वेल एज इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट. लाइक आई सेड टूथपेस्ट मार्केट मोनोपोलिस्टिक है, बट टूथपेस्ट में अगर कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट है तो अब वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट का प्राइस भी काफी ज्यादा हो जाता है. तो वो एक नॉर्मल टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकता, तो वो प्रोडक्ट अलग हो गया फिर. तो अगर वेरिएशन काफी ज्यादा हो गया तो प्रोडक्ट ऑल टुगेदर क्या होगा, और प्रोडक्ट डिफरेंट होने पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा. कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री आपने लिया, प्रोडक्ट ये ओलिगोपोली हो गया, लार्जली फ्यू फर्म्स आर देयर डोमिनेटिंग इन द मार्केट. मार्केट फॉर प्योर मोनोपोली लाइक रेलवेज, ठीक है, तो वहां एग्जांपल ऑब्वियसली देयर आर नो अदर railway. Indian railway we can say
हैज द मोनोपोली। तो प्योर मोनोपोली अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप अगर प्रोडक्ट को आप कैटेगराइज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन के और भी मीन्स है, इज नॉट द ओनली द रेलवे, देयर कुड बी रोड ट्रांसपोर्ट, देयर अदर ट्रांसपोर्ट. So we have to study all different form of market, and the concept of market will be product specific. So what we will be doing here, we will start basically with this form, perfect competition, because वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए. That will be your reference point, and starting from that point, then we will study the different form of market and how those market are different from the perfect competition market. So terms of question, this section is going to be having a weightage of about I will say 50 marks. You will always get 3 to 4 questions from this market structure. Or economic service में again the weightage will be still more than that. More number of questions will be in the economic service as compared to the option. And within that, the most important section is going to be the oligopoly. वो oligopoly से start होगा. Now, before starting with any form of market, I will just explain few basic things here. Basic things, just assuming that you do not have any background of economics. पहली बार economics पढ़ रहे हैं. अगर कोई स्टूडेंट पहली बार economics पढ़ रहा है तो market structure general concept तो है नहीं है. They are not studying the market where different product is being sold. The concept of market is product specific. Market for pen is different. Market for iPad will be different. प्रोडक्ट चेंज करने पे मार्केट डिफरेंट हो जाएगा, पहली बात याद रखेंगे. अब पॉइंट इज whether there will be one firm or few firm or large number of firm, what is the objective of that firm? Their objective is to produce that much quantity so that their own profit get maximized. We are assuming that the objective of that firm is to maximize their profit. So first thing they have to decide how much quantity they will produce so that their profit get maximized. So we have to find the profit maximizing quantity, and profit is always the difference between revenue and cost. Revenue or cost का difference है. I will start first with the basic part. You can write it in this form. When I say profit, so profit will be the difference of total revenue and total cost. Difference between total revenue and total cost. Like for example, suppose if I say find profit for this institute, so how to find profit? Revenue will become what? Fees multiplied by number of student. तो आप उसको जनरल टर्म में लिख सकते हैं प्राइस multiplied by quantity. That will be the revenue. And total cost will always have two parts. One part of the cost is fixed. Fixed means it does not depend upon quantity. ठीक है, definition पे जानेंगे. When I say fixed cost, it means it is independent from quantity. Like the amount of rent does not depend upon whether there are 10 students or 50 students or 200 students. The rent will remain fixed. तो जो कॉस्ट क्वांटिटी का फंक्शन नहीं होता है, दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. सो वन पार्ट ऑफ द कॉस्ट विल बी फिक्स्ड. अदर पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. इट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी. लाइक electricity bill, that is variable. If there will be more lectures, more classes, there will be more electricity bill. So that cost will be variable cost. Study material cost, that will be the variable cost. Depend upon the number of students. More students, more printing, more cost. So cost will have basically two parts. One is fixed, other is variable. So profit is basically the difference of revenue and cost. Club करके मैं इसको profit को usually I will denote by pi symbol. So profit is the gap between revenue and cost. Now question is we have to maximize the profit. Profit का equation लिखा है, we have to find profit maximizing quantity. Mathematically क्या कहते हैं, अगर किसी फंक्शन को मुझे maximize करना है,
तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर वो कोर मैथ्स नहीं भी पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आपको वो अप्लाई नहीं करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। डिफरेंशिएशन का मतलब है आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। जैसे आप नॉर्मली फंक्शन लिखते हो dy बाय dx, तो ये चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x होता है। तो इसे आप लिखेंगे इस फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ tr विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, दैट फर्स्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म में रीड ऐसे करेंगे, इट इज नथिंग बट चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। dy by dx is what? Change in y due to change in x. So now read it, change in revenue due to change in quantity. This change in revenue due to change in quantity will be called as marginal revenue. What is the meaning of marginal? Marginal is always additional or change. So marginal revenue is additional revenue due to additional quantity or change in revenue due to change in quantity. Similarly, what will be marginal cost? Additional cost due to additional quantity or change in cost due to change in quantity. What will be marginal utility? Just apply that change in utility due to additional unit of consumption. What is marginal product? Change in product due to change in labor or change in capital. So marginal always stands basically for the change or additional. So whenever you differentiate, you basically get the concept of marginal. So derivative of TR with respect to quantity, this term is nothing but marginal revenue. What is the meaning of marginal revenue? Marginal revenue is change in total revenue due to change in quantity. So when you sell one additional quantity, how much is the change in total revenue? That change will be called as the marginal revenue. So what is the derivative of total cost? Marginal cost. So MR minus MC equal to 0, which means MR must be equal to MC. Marginal revenue must be equal to marginal cost. This is your first condition. So when profit of any firm get maximized? Profit of any firm will get maximized when that firm produces that much quantity where MR is equal to MC. Equality of MR and MC will determine the profit maximizing quantity. अब ये तो मैथ्स की बात होगी, आपको what is economics behind it? Why profit get maximized when MR is equal to MC? Just understand this problem. I said, suppose any firm is producing any particular quantity, first unit. Due to this quantity production, there will be some addition to cost, delta for change. There will be some addition to cost and there will be some addition to the revenue also. Addition to cost is called marginal cost. Addition to revenue is marginal revenue. So if I say that addition to revenue is 100 due to this quantity production and addition to cost is 80 ड्यू टू दिस क्वांटिटी प्रोडक्शन, मतलब एक क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस करता है फर्म तो इट विल एडिंग 100 टू द रेवेन्यू एंड 80 टू द कॉस्ट. सो इज इट प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी? It is profitable because addition to revenue is more, addition to cost is less. So it means whenever MR will be greater than MC, firm will continue to produce more and more quantity because it is profitable for them. So they will produce more and more quantity so long as MR is more than MC. Now if I change the example, marginal revenue or marginal cost. If marginal revenue is 60 and marginal cost is 80, then when you produce this quantity, you are adding 60 to revenue and 80 to cost. That means your profit will get reduced by 20. There is a loss on that unit. So it is unprofitable to produce that quantity. So whenever
marginal revenue will be less and marginal cost will be more, firm will prefer to produce less quantity. तो quantity कब तक change होती रहेगी? This quantity will continue to increase so long as MR is more. Quantity will continue to reduce so long as MC is more. So when profit get maximized, your profit get maximized only when MR is equal to MC. That will be your equilibrium quantity. So for equilibrium quantity, MR must be equal to MC. This is the economic interpretation side. Mathematically तो ठीक है, हमने फंक्शन लिख दिया, उसको मैक्सिमाइज कर दिया, बट यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इक्वालिटी ऑफ एमआर एंड एमसी इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो विल एक्सप्लेन, जब आप कंटेंट लिखेंगे विल एक्सप्लेन कि व्हाई इक्वालिटी ऑफ एमआर एंड एमसी इज नेसेसरी. ये पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग क्लियर है, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्लियर है, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट इज क्लियर. और प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? whenever MR is equal to, and this concept will remain same whether you study monopoly or monopolistic or oligopoly or perfect competition. ये concept change नहीं करना आपको. In any market profit will get maximized where MR is equal to MC. I said this is basically the first condition. First differentiation equal to 0 होना है. Second derivative I said it should be negative. First derivative equal to 0 and second derivative should be negative. अब second derivative का मतलब है I differentiate MR with respect to quantity and then differentiate MC with respect to quantity and that should be negative. ये negative आना चाहिए. First derivative equal to 0, second derivative का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? when you मैथमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x है. dy by dx इज ऑलवेज गिव यू द स्लोप. स्लोप भी है, मतलब स्लोप ऑफ tr इज स्लोप ऑफ tc इज mc. तो जब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो किसका स्लोप मिल रहा है? स्लोप ऑफ mr और mc मिलेगा. फिर नाउ दिस टर्म कैन बी नेगेटिव ओनली इफ द नेगेटिव नंबर इज मोर. मतलब स्लोप ऑफ mc शुड बी greater than slope of MR. So write it only this like slope of MC, slope of MC greater than slope of MR. Slope of marginal cost must be greater than the slope of marginal revenue. This is second and sufficient condition. सी इन द एग्जामिनेशन आपको ये शो नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना. एग्जामिनेशन में सिर्फ आप एक ही लाइन लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ फर्म गेट मैक्सिमाइज वेयर फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नंबर 1 MR इक्वल टू MC, सेकंड स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. दैट्स इट. ठीक है, आपको बस उतना ही वो लाइन लिखनी. बट दिस कंडीशन विल रिमेन सेम इन एनी फॉर्म ऑफ मार्केट. So this is your first basic point. When profit get maximized, it get maximized when A, MR equal to MC, B, slope of MC greater than slope of MR, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं MC कट MR फ्रॉम बिलो. ठीक है, टेक्निकली आप ऐसे लिखते हैं बट सिंपल लेमन लैंग्वेज में लिखेंगे MC cut MR from below. When it will cutting from below, that means slope of it will be higher. Slope of it will be greater. Only then it will cut it from below. So MC cuts MR from below. You can write it in that form. This is your first basic point. Now write down the second one. Okay, so everything will be coming out in notebook in terms of description also. Let's complete this second basic point. Again, write the equation for profit, and it is TR minus TC asset. Profit pi के symbol से total revenue is price into quantity minus total cost. See, in place of price, you can always write average revenue. And why I can write average revenue?
say this. If you calculate total revenue, it is price into quantity. So how to find the average revenue? Average means per unit. So to calculate average revenue, you will simply divide the total revenue with quantity. In place of total revenue, you can write P into Q divided by Q. So Q will always cancel out. So AR is always equal to what? So आप AR लिखो या price लिखो, it is one and same thing. In place of price, I can always write average revenue. So average revenue into quantity is total revenue. Similarly, what will be total cost? Average cost into quantity. जैसे total revenue AR into quantity है, वैसे total cost will be average cost into quantity. That will be profit. अब देखिए, profit is now, you can say, you can take quantity common in bracket AR minus AC. This is the equation for profit now. How to find this quantity? Q. Q is always profit maximizing quantity. And how to find it? Profit maximization के लिए आपने कंडीशन पहले ऊपर लिख रखा है. तो जब आप MR और MC को इक्वेट करेंगे, then you will get basically that Q. By equating MR and MC, you will get profit maximizing quantity, क्योंकि हमने quantity के respect में differentiate कर रखा है. So you will get this Q by equating MR and MC. ये Q तो मिल जाएगा. Now the term in bracket can be 0, can be positive, can be negative. If AR is equal to AC, then 0, मतलब no profit, no loss. No profit, no loss is also called as the break-even point. So there are three possibilities now. Write all those three possibilities. If number 1, AR is equal to AC. If AR is equal to AC, and always remember, in place of AR, what you can write? AR is always can be substituted by, so either you can write P equal to AC or AR is equal to AC. So if AR is equal to AC, then it is a case of no profit, no loss, which is technically called as break-even point. Break-even point. No profit, no loss. Now, if AR is greater than AC, then if AR will be greater than AC, then this number will be positive. This situation is called as super normal profit. से super normal profit कहते हैं. Excess profit भी कह सकते हो. Abnormal profit भी कह सकते हो. If AR is greater than AC, then it is called super normal profit or abnormal profit or excess profit. Why it is called super normal? What is normal? Normal, in fact, इसमें included है. When you say no profit, it includes normal profit. But how no profit means normal profit? When I say no profit, no loss, मतलब revenue is equal to cost. Cost का जो interpretation होता है, when I say cost is being recovered. Cost is basically the payment made to the factors of production. That will be your cost. I will just explain here. Suppose in order to produce any quantity, we are using labor, land, capital, entrepreneur. ये चार basic factor of production हो गए. To labor you pay wage, to land we pay rent, to capital you pay interest, and to entrepreneur you basically pay the profit. अब अगर मैंने ये सारे ऐड कर लिए तो this will become 200. This will be referred as a cost. Now if revenue is also 200, तो अकाउंटिंग सेंस में आप कहेंगे कि प्रॉफिट फर्म के लिए क्या है? 0, because revenue is equal to cost. But in that 0 profit, what is this 50? ये नॉर्मल है. Now if revenue is 250, then बट वो प्रॉफिट कौन रिटेन करेगा? लेबर को तो वेज मिल गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया,
लैंड को रेंट मिल गया, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगी दैट विल बी रिटेन बाय द एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस द प्रोडक्शन फंक्शन, so that profit will be in excess of the normal profit. So whenever TR will be greater than TC, you call it supernormal or abnormal or excess profit. ठीक है? So if AR is equal to AC, no profit, no loss, or normal profit you can say. If AR greater than AC, then supernormal profit. Third case is very important, and that is if AR is less and AC is more. If AR is less and AC is more, then what is this number? AR कम है, AC ज़्यादा, ये नंबर नेगेटिव हो गया. Negative means now firm is having loss. So if there is loss for a firm, then what firm will do? Loss अगर हो रहा है, then what will be the behavior of firm? Again, two possibilities are there. In loss, firm may continue to operate or firm may shut down. हमेशा लॉस में शट डाउन नहीं करते. शट डाउन तो लॉन्ग टर्म में करते हैं तो नहीं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी शट डाउन होगा. शट डाउन का बिजनेस का मतलब ये नहीं कि लीविंग द बिजनेस. कोविड पीरियड में बहुत सारे प्लांट शट डाउन हुए थे, बंद नहीं हुए थे. शट डाउन इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री. We could be temporarily shutting down this operation. That is shut down. I will explain why it is better to shut down and why it is better to continue despite loss, in which condition it will be there. So remember, in the case of loss, there are two possibilities. Loss के अंदर आपको याद रखिएगा दो possibilities है. ये order में लिख लेंगे उसे. First possibility that firm may continue to operate. Firm may continue to operate, and the second is a firm may shut down production. Now when firm will continue and when firm will shut down, I will explain. Firm will continue to operate if price is greater than average variable cost, P greater than AVCO. Price more than variable cost also means that revenue is greater than variable cost. और shutdown कब होगा? When price will be less than AVC, or you can say revenue will be less than TVC, total variable cost. If your revenue is more than variable cost, if your revenue is more than variable cost, it means you have covered your variable cost, but revenue is more than variable cost. So if you have covered your variable cost, what else you are covering now? Fixed cost. तो कुछ fixed cost मेरा cover हो गया. Shut down करने पे पूरे fixed cost का loss हो जाएगा. Because fixed costs are those costs which does not depend upon quantity. So even when you do not produce, you have to bear that cost. Even if we are not conducting the class, we will have to pay the rent. That is a fixed cost. So if you are able to cover your variable cost and revenue is more than variable cost, so it is better to continue despite loss. Loss के बावजूद production sensible है. It makes economic sense to continue, because if you close down, the loss will be more. Loss तो दोनों में होने. Production करने पे loss कम हो रहा है, production नहीं करने पे loss ज़्यादा होगा. So long as revenue is more than variable cost, it is better to continue despite loss. But if revenue is less than variable cost, then it is better to, what is the meaning of this condition? Revenue less than variable cost means what? Revenue उतनी भी नहीं आ रही कि आप electricity bill pay करो. So better to close down, temporarily close down the business. You are not able to cover the variable cost, so you can save that loss if you stop the production. Because variable cost depend upon quantity. Production नहीं करेंगे तो variable cost नहीं आएगा. So when to produce and when not to produce? Firm will continue to produce if revenue is more than variable cost. And when firm will not produce, or firm will prefer to shut down if revenue is less than variable cost.
So what is exactly shutdown price? It's a shutdown price. Price equal to average variable cost. But average variable cost is not a constant number. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता है. अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करें तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी लाइक दिस. So which value? The minimum one. This one. This price will be referred as. This price will be referred as shut down price. So shutdown price is equal to what? Minimum of average variable cost. Minimum of ABC. ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे गए. आई विल जस्ट नाउ एक्सप्लेन रिलेट विद द क्वेश्चन पेपर आल्सो. लाइक व्हाई फर्म कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट लॉस. सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई फर्म कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट लॉस. हाउ टू आंसर? व्हाई फर्म कंटिन्यू टू ऑपरेट डिस्पाइट लॉस. ये पूरा आइडिया एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए. Normally, firm will be in equilibrium where following two conditions are satisfied: MR equal to MC and slope of MC greater than slope of MR. Now, what happens in the short run that there will always be some fixed factor, so there will be some fixed cost. So, firm may continue to operate despite loss if the revenue is greater than variable cost, because if they will shut down, the loss will be more. And if they continue, the loss will be less. इस आइडिया को आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है. एंड वी विल एक्सप्लेन, वी विल टेक द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ये दो कंडीशन बेसिकली याद रखिएगा. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बेसिक, profit get maximized where these two conditions are satisfied: MR equal to MC and slope of MC greater than slope of MR. And second basic point is more important: if AR is equal to AC, then there is no profit, no loss. This is normal profit case. तो क्वेश्चन जो पूछ रहे दोनों में आ रखा है उसमें ये अप्लाई होना है. वहां पे तीनों कंडीशन पूछेगा: नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल और लॉस. तीनों कंडीशन दिखाने हैं ग्राफिकली. तो नो प्रॉफिट, नो लॉस. इफ देयर विल बी AR ग्रेटर देन AC, देयर विल बी एक्सेस प्रॉफिट, एंड AC ग्रेटर देन AR, देयर विल बी विद इन लॉस. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज: फर्म में कंटिन्यू और फर्म में शट डाउन. ये बेसिक पॉइंट को आप सिर्फ नोट के फॉर्मेट में लिख लीजिए पहले, so that you can remember it later on. और फिर then we can start with the market. Remember, this point will remain same for all the market. Whether you study oligopoly, monopolistic, any market, this point will be relevant. So just write down that point up to this, because class का जो dictation होना है वो काफी formal होना है. So that I am assuming कि you are not reading the book now. ठीक है. सो दैट एवरीथिंग मस्ट बी अवेलेबल इन दी नोटबुक. तो शॉर्ट में भी पहले लिखना है और फिर उसको डिटेल एक्सप्लेन भी करना है. राइट डाउन द बेसिक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. राइट डाउन द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. द फर्म और मार्केट में डिफरेंस समझ रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूं फर्म और मार्केट. मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. तो यहाँ पे जो TR और TC लिख रहे हैं ये किसके लिए? नॉट फॉर द मार्केट, दिस फॉर द सिंगल फर्म. मार्केट इज लेट अस से फॉर द कार इंडस्ट्री. आई एम रेफरिंग टू द मारुति. तो मारुति के सेल्स की बात हो रही है, उसके प्रोडक्ट की बात हो रही है. सो फर्म इज पार्ट ऑफ द मार्केट. So there can be only one firm if it is monopoly. There may be two firm if it is duopoly. There will be large number of firm it is monopolistic. Right. The firm is said to be in equilibrium when following two conditions are satisfied. Following two conditions are satisfied. Number one, MR is equal to MC. MR is equal to MC. And second, slope of MC must be greater than slope of MR. Slope of MC must be greater than slope of MR.
तो ये कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन पता हो जाए. इकोनॉमिक रीजन, वाई इक्वालिटी ऑफ एमआर एंड एमसी इज नेसेसरी, राइट ऑन द रीजन. नेक्स्ट पैरा पे द इक्वालिटी ऑफ, मतलब यू हैव टू इलैबोरेट दैट. वो तो कंडीशन हो गया कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करने. नाउ यू हैव टू इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर. द इक्वालिटी ऑफ MR and MC is necessary because the equality of MR and MC is necessary because if they are not equal, then firm will continue to change its output. Firm will continue to change its output. For example, if marginal revenue is greater than marginal cost, if MR is greater than MC, then it implies that by producing an extra unit, firm will add more to total revenue. Firm will add more to total revenue, and it will add less to cost. Firm will add more to total revenue and it will add less to cost. Therefore, it is profitable to produce that quantity. However, if MC is greater than MR, then it implies that by producing an extra unit, firm will add more to total cost. And less to total revenue. So it means it is unprofitable to produce that quantity. It is unprofitable to produce that quantity. So from this it follows that a firm will continue to change its quantity. So that MR becomes equal to MC. बेसिकली इस पेज पे जो कंटेंट दिख रहा है ये आपने इलेबोरेट ऐसे करना है, इस फॉर्मेट में नहीं करना है.
आंसर शीट का लुक मैथमेटिकल नहीं देना आपको, दिस इज द वे, मैथ्स रीजन है बट उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे करना आपको, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाई एमआर एमसी इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड, इफ दे आर नॉट इक्वल देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बेसिक पॉइंट रहेगा। सेकेंड इज फॉर दिस, डन दिस, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। In short run, there could be, supernormal profit or normal profit or loss. There could be supernormal profit, normal profit or loss. If price is equal to average cost, price is equal to, price कह दो या AR कह दिए, it is one and same thing. If price is equal to average cost, then there will be only normal profit. If price is equal to average cost, then there will be only normal profit. Because normal profit is included in cost. Because normal profit is included in cost. Normal profit is included in cost. But when price will be greater than average cost, then there will be super normal profit. There will be super normal profit or abnormal profit or excess profit. Supernormal, abnormal या excess profit. But when price will be less than average cost, then there will be loss. Price will be less than average cost, then there will be loss. In the case of loss, there are two possibilities. In the case of loss, there are two possibilities. Number one, firm may continue to operate. Firm will continue to operate despite loss. If price is greater than average variable cost, P greater than ABC, or total revenue greater than total variable cost. Total revenue greater than total variable cost. This is because when revenue exceeds total variable cost, then it implies that some part of fixed cost is also covered. Some part of fixed cost is also covered. Therefore, loss will be less.
when firm continue to operate. When firm continue to operate. The second possibility. Firm will shut down business. Firm will shut down business. Firm will shut down business. Yeah, operation. Firm will shut down business if price is less than ABC. Price is less than ABC or TR is less than TVC. TR is less than TVC. This is because by shutting down business, firm can avoid variable cost. Firm can avoid variable cost. Next पे आपने. In fact, firm always continue to operate. Firm always continue to operate. Firm always continue to operate if firm earns operating profit. If firm earns operating profit. Underline that term. Operating profit. And remember, this operating profit is nothing but total revenue minus total variable cost only. If you subtract the total cost, then it will become profit. But operating profit is term different. It is revenue minus variable cost only. So if I say that operating profit is positive, this number can be positive only when revenue will be greater than variable cost. So if revenue more than variable cost, there is operating profit. It is better to operate. And if variable cost will be more than operating loss है, operate करने में loss है, better not to operate then. And if you divide both sides with quantity, what you will get? Total revenue by quantity is average revenue. Average revenue is price. Variable cost by quantity is P greater than ABC. तो वही पॉइंट आपने लिख रखा है. फर्म ऑपरेट तभी करता है जब तक उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके. टोटल कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा. तो टू टेक अ डिसीजन वेदर टू ऑपरेट नॉट टू ऑपरेट, वी टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू अकाउंट. ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन और स्टार्ट विद द फॉर्म ऑफ मार्केट. ठीक है, तो कंटेंट बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी कंटेंट विल कम इनटू योर आंसर, बट वो बेसिक रजिस्टर में होना चाहिए वंस यू स्टार्ट विद द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन. Do one thing first. Write down the features of this market. Always level पे कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. What are the features of perfect competition? But start with this. Perfect competition market is that market which is characterized by large number of sellers. The categorization of market is based upon number of seller. That means now we are referring to a market. In this market there are a large number of firms. What is the significance of large number of firms in the market? There are many firms in the market.
which means one seller is very small in relation to the market. So that single seller will not have any control over the market price. They will act as price taker. Price will be determined by the market, accepted by a firm, because that firm is very small relative to the market. What happens that price will be determined by the market, and in market there are many firms, and I am referring to one particular firm. So price in a market is always determined by market forces in demand and supply. So we have a demand curve and supply curve. Their intersection determine market price. Suppose I take that price as 10. So market price is determined at 10. At that price of 10, this firm can sell 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, as much unit as it can. तो अब जरा फर्म के एंगल से सोचना इसमें क्या आउटकम आ रहा है. If I am writing for the firm, प्राइस, क्वांटिटी, TR और वहां से हम निकाल सकते हैं. प्राइस विल रिमेन 10. मार्केट का प्राइस सेम रहना है. At the same price you can sell 1 unit, 2 unit, 3 unit and so on. What will be the total revenue? It will be 10, 20, 30 and so on. And what will be the marginal revenue? Marginal means additional. How much is addition to revenue always? Addition to revenue always will be 10. So price is always equal to what? जो प्राइस की वैल्यू होगी वही मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू होगी, एंड दे आर इक्वल टू व्हाट? सो वट एवर बी द मार्केट प्राइस, marginal revenue will be always equal to that. So your marginal revenue will be this horizontal line. Perfect competition का प्राइस और MR सेम होता है. Price and MR is same in which market? Perfect competition, not always. Just for perfect competition. Why it is same? Because firms are price taker. And why they are price taker? Because there are large number of firms present in the market and one single seller do not have control over the market price. Because of the large number of sellers in the market, firms act as price taker. Whenever the question is for the perfect competition and you are drawing the diagram, so whatever be the market price, corresponding to that market price, you will draw that horizontal line. This line can go up or down only when market will change. मार्केट का डिमांड सप्लाई तो चेंज हो सकता है. इफ दैट विल चेंज द प्राइस विल चेंज एंड देन दिस लाइन कैन मूव अप और डाउन. क्लियर? सो व्हाट इज द फीचर सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वन फर्म एक्ट एज प्राइस taker. They do not have control over the market price. They accept the price which is determined by the market. Just write down the one liner significance. So can I say that under perfect competition, equilibrium of firm require that price will be equal to marginal cost. Equilibrium of firm के लिए MR equal to MC चाहिए, but perfect competition का MR प्राइस के बराबर होता है. तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं. P equal to MC भी होगा perfect competition में. Not always, but in this market, because price itself is margin. Write down. Perfectly competitive market. हाँ, large number of cell के आगे respond. Perfectly competitive market is characterized by presence of large number of sellers. The significance of large number of sellers that
significance of large number of sellers is that a single seller act as price taker. A single seller act as price taker. A single seller act as price taker. It means at the given market price, at the given market price, at the given market price, firm can sell, firm can sell, firm can sell as much quantity as it can. Firm can sell as much quantity as it can. Therefore, price is equal to marginal revenue also. Price is equal to marginal revenue. मतलब प्राइस और एमआर दोनों सेम होते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन. क्लियर है? सेकेंड फीचर ऑफ दिस मार्केट is that all firms will be selling homogeneous product. मार्केट के अंदर जितने भी फर्म्स हैं, we are assuming that all are selling identical products. So as a buyer, we can't separate between the product produced by one firm and the other firm, although there is no example of such product which exists in the real life. We are assuming a hypothetical market where large number of firms are there, all selling same product. Second point में homogeneous product. The large number of sellers, the large number of sellers, the large number of sellers are selling identical product, are selling identical product. Large number of sellers are selling identical product, which means buyer cannot separate, buyer cannot separate between, buyer cannot separate between output produced by different firms, output produced by different firms. And third feature, you can write free entry and exit. Free entry and exit. मतलब इस मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट इज कंप्लीटली फ्री. फर्म्स कैन एंटर, फर्म्स कैन लीव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फीचर नाउ? इस फीचर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इन लॉन्ग रन price will always be equal to only average cost, which means firm will have having only normal profit. Because मान लिया अगर प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो, पी ग्रेटर देन एससी है, तो पी ग्रेटर देन एससी का मतलब होता है सुपर नॉर्मल. मतलब इफ फर्म्स इन द मार्केट आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड एंट्री इज फ्री, so what will happen? More firms will enter. As more firms will enter, what will happen? As more firms will enter, ये सप्लाई का राइट के साथ शिफ्ट हो जाएगा एंड प्राइस विल डिक्रीज. मतलब प्राइस कब तक डिक्रीज होता रहेगा? जब तक एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए. और लॉस होने पे एग्जिट हो गए, एग्जिट होने पे सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, प्राइस विल स्टार्ट. तो प्राइस विल कंटिन्यू टू चेंज सो दैट इट ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन एनी मार्केट जिसमें ये फीचर होगा, उस मार्केट में लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होना है? नॉर्मल प्रॉफिट होगा. फॉर नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होना, मतलब टी आर इक्वल टू टी सी होगा. एंड दिस इज गारंटीड बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. जस्ट राइट ऑन वन लाइन. ड्यू टू दिस फीचर firms will earn only normal profit in long run. Firms will earn only normal profit in long run.
only normal profit in long run, because in the case of supernormal profit, new firms will enter into market, and in the case of loss, firms will leave the market. So just remember, whenever I say entry and exit can always happen in the long run, not in the short run. परफेक्ट कंपटीशन के और भी फीचर हैं, लाइक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है, तो देयर आर मेनी अदर फीचर्स, बट दीज 3 आर क्रिटिकल जो हमें यूज करना है. और क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं पूछा जा रहा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. सो वी मस्ट नो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय large number of seller. Due to large number of seller, firm act as price taker. Product is homogeneous, so as a bar we cannot separate. Free entry and exit guarantee that in long run we will have only normal profit. Now with this basic understanding, now we can attempt in fact one question from last year, और ये क्वेश्चन कॉमन है और IAS में ये 2015 का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्विस में 2017 का क्वेश्चन है. ठीक है, रीड दैट क्वेश्चन अगेन फर्स्ट. ठीक है, एवरी पार्ट ये इन्हीं के जो बेसिक पार्ट है तो उसका क्वेश्चन से रिलेशन है. एवरीथिंग इज बेसिक रिलेटेड टू द क्वेश्चन. So read that question carefully. Consider the equilibrium of a firm under perfect competition. Question is referring to perfect competition and question is referring for a firm under perfect competition. Find out the condition for normal profit, supernormal profit or loss, whichever is applicable for the firm without using average cost curve. Average cost curve use नहीं करना है. एक्सप्लेन ओनली डायग्रामेटिकली, कोई इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, एक्सप्लेन ग्राफिकली ओनली. तो 3 केस बनेंगे, नॉर्मल का, सुपर नॉर्मल का और लॉस का. 3 सेपरेट डायग्राम बनने हैं और 3 कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना है और जो कंसेप्ट अभी बता रखा है उसको इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन इन 17. वी हैव टू शो 3 डिफरेंट कंडीशन, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल एंड विदाउट यूजिंग, मतलब डायग्राम में एवरेज कॉस्ट नहीं आना चाहिए. अगर क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि यू हैव नॉट टू यूज एवरेज कॉस्ट कर्व, नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन ग्राफिकली, यू कैन ओनली यूज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. एवरेज यूज नहीं करने का मतलब है वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट विद यूजिंग एवरेज कॉस्ट कर्व, सो वी कैन ओनली ड्रॉ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच. TROTC अप्रोच फॉलो करना है. पहले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें, और सेम क्वेश्चन के 17 और 2017 और 15 के क्वेश्चन. अब जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें देखेंगे, सिंस क्वेश्चन वाज रेफरिंग टू परफेक्ट कंपटीशन, I said under perfect competition firm act as price taker. तो प्राइस टेकर का मतलब क्या, प्राइस की जो वैल्यू है वो फर्म के एंगल से तो कांस्टेंट होगी. P into Q, quantity can vary but price cannot. So what will be the total revenue? 10, 20, 30. So if you are plotting total revenue curve, what will be the shape of it? On axis you write quantity and here I am writing total revenue. Still will be a straight line. Every time when price, when quantity increases, revenue will rise by S. So you can draw this straight line. What will be the slope of that line?
Line can be drawn steeper or flatter. That depend upon the price. Price is more, you can draw steeper. Price is less, you can draw flatter. Line, you have to keep it straight. Why you are keeping it straight? Because it is perfect competition. It will not remain same in monopoly. Perfect competition के अंदर ये draw करते हैं. So in perfect competition you can draw the line straight. This will be a total revenue line. ठीक है? Now draw total cost. I said total cost के दो component है. Fixed और fixed का मतलब जो quantity पे depend, which means even when quantity will be zero, there will be some fixed cost. So even when quantity is zero, there will be some fixed cost. तो अगर हम ओनली फिक्स को ड्रॉ करेंगे तो लाइन को फ्लैट ड्रॉ करेंगे, बट मुझे टोटल ड्रॉ करना है, फिक्स प्लस वेरिएबल. सो व्हेन यू add the variable cost, then as quantity will increase, variable cost will also increase. So starting from this point, you have to draw the variable cost curve. So when I draw only separately, मैं इसको explain कर दे रहा हूँ पहले. If you are drawing the variable cost, ये start होता है इनफैक्ट origin से, and it is inverted S in shape. Total variable cost, ये only total variable cost है. Variable में क्या ऐड करना है? फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे. फिक्स कॉस्ट इज एक्चुअली कांस्टेंट. तो व्हेन यू ऐड बोथ, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये यहां से बिगिन हो जाएगा, इसके पैरेलल चलेगा. दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज फिक्स कॉस्ट. सारे शो नहीं करने से वेरिएबल टोटल ड्रॉ करना है. अब ड्रॉ करते समय व्हेन यू ड्रॉ द टोटल कॉस्ट कर्व, दिस टोटल कॉस्ट कर्व कैन बी अबव इट, इट कैन बी बिलो इट आल्सो, और इट कैन बी ओनली टेंजेंट आल्सो. तीन केस दिखाने हैं आपको, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और लॉस. सपोज आई स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द नॉर्मल प्रॉफिट. इफ इट इज जस्ट टेंजेंट, टीआर और टीसी की जहां टेंजेंसी है, दिस विल बिकम द क्वांटिटी. मतलब फर्म के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फर्म? फर्स्ट बेसिक पॉइंट जो लिखा है, एमआर इक्वल टू, बट यहाँ एमआर एमसी तो हमने बनाया नहीं है, इंटरप्रेट कर सकते हैं एमआर एमसी. आई सेड स्लोप ऑफ टीआर इज एमआर, स्लोप ऑफ टीसी इज एमसी. तो जहां पे दोनों टेंजेंट हो जाएंगे वहां दोनों का स्लोप इक्वल हो गया. दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे टीआर और टीसी दोनों इक्वल हैं. टीआर टीसी इक्वल होने का मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस. तो दिस इज डायग्राम फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. दिस इज डायग्राम फॉर द नॉर्मल प्रॉफिट. ये फर्स्ट डायग्राम, दिस इज फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. There will be, remember, 3 different diagram. Draw the first one only. Draw a TR line and TC just tangent on TR line. ठीक है, इस डायग्राम में हमने एवरेज कॉस्ट को यूज नहीं किया. वी हैव नॉट ड्रॉन एवरेज कॉस्ट. Okay, first is for normal profit. Now use the second diagram to show super normal profit. Apply this concept, and then by using this concept, now you have to show for super normal profit. Diagram number 2 is for super normal profit. So first draw the straight line, total revenue line, then total cost starting with this fixed cost. Now what happens that if you draw total cost above, ये तो लॉस आ जाएगा. टेंजेंट बनाएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और लोअर रखेंगे तो यू हैव टू कीप इट इन्वर्टेड एस इन शेप.
gap of TR and TC is profit and that profit has to be maximized. एक बार यहां जो पॉइंट आ रहा है ये क्या हुआ, TR नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए टेंजेंट होना जरूरी है। यहां पे हम सिंपली कहेंगे प्रॉफिट जीरो है, यहां भी प्रॉफिट जीरो हो गया। प्रॉफिट इज अ गैप ऑफ TR एंड TC, so the gap between this straight line and this TC line is profit and you have to maximize the profit. तो जहां पे ये गैप मैक्सिमम होगा वो क्वांटिटी होगी। So just mark a point where you find the gap maximum between TR and TC. This is going to be the quantity. But again I said profit maximize तब होता है जहां पे TR, जहां पे MR और MC इक्वल होते हैं। अब हमने MR और MC तो बनाया नहीं है इसमें। Can I say that at this quantity MR is equal to MC? इस क्वांटिटी पे MR और MC इक्वल होगी। हाउ? स्लोप इक्वेट करने हैं, तो जो लाइन स्ट्रेट है उसका स्लोप तो हर जगह सेम रहना है, जो नॉन लीनियर बनाते हैं उसका स्लोप एवरी पॉइंट पे डिफरेंट होगा। सो इफ यू वांट टू फाइंड स्लोप एट दिस पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू, इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ जानना है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट you will basically draw a tangency and you will find this tangency parallel to the TR line और दो पैरेलल लाइन के स्लोप सेम हो जाएंगे। यहां भी MR इक्वल टू MC है, without drawing the MR line or MC line we have shown that. So in this case this gap, this two is a supernormal profit. This is your diagram number 2. Third is very important बिकॉज थर्ड में क्या शो करना आप, बट लॉस में मैंने कहा दो पॉसिबिलिटी होती है। व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटी इन लॉस? फर्म में कंटिन्यू टू ऑपरेट, और फर्म में आपको ये दिखाना है कि फर्म इज हैविंग लॉस बट फर्म विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ग्राफिकली। फर्म इज हैविंग लॉस बट फर्म विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, so how will show it graphically? The question was saying just show it diagrammatically. You have to draw a diagram which shows firm is having loss but firm will operate. अब आपने जो स्टार्ट का पॉइंट बेसिक लिखा था उसको बेसिकली रिलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट था ये, सेकंड पॉइंट के अंदर यहां लिखा है मैंने। कौन सा डायग्राम बनाना है? फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है? ये बना रहे हो लॉस। लॉस में कंटिन्यू करना है, शट डाउन नहीं दिखा रहा है, तो कंटिन्यू करने के लिए क्या कंडीशन है? TR ग्रेटर देन TVC होना चाहिए। सो नाउ इन दिस डायग्राम यू विल ड्रॉ TC लाइन एज वेल एज TVC लाइन, दोनों दिखाएंगे तभी तो क्लियर होगा। बोथ कर सकते हैं। देखो ये केस थर्ड क्रिटिकल है और इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्रॉ द टोटल रेवेन्यू लाइन। Stage manager off. लिखा हुआ रहा स्टेज मैनेजर ऑफ, लिखा हुआ रहता है।
first draw the total revenue and then draw first of all total cost. Loss show करने के लिए total cost must be greater than total revenue. Your complete total cost must be above it. Complete total cost must be above it. So draw the total cost line starting from this point like this. Completely above होना चाहिए. If there is profit, we maximize. If there is loss, we minimize. So wherever you find the minimum gap, mark that quantity. Minimum gap between TC and TR. So this is going to be the quantity. But now we have to show that despite loss, firm will operate. So since total cost is greater than total revenue, therefore there is loss. But loss में operate करना है, which require TR greater than TVC. So now draw the TVC line lower than the TR line. TVC कहाँ से start करेंगे? Origin से. Starting from the origin, parallel to the total cost line, draw this line. So if I mark points here, like if it is A, this point is B, this point is C. So how much is a loss here? Loss is distance AB. But despite loss, firm is operating because firm is having operating profit. And how much is the operating profit? What is operating profit? Distance between TR and TVC. Distance between TR and TVC. So operating profit is distance B to C. This is your diagram number 3 for loss. Although that question appears very easy and direct from the basic concept, but to get marks in that, you need to elaborate that. और ये 3 डायग्राम बनाएंगे, सिंगल डायग्राम से ही करना है. And most of the students जिन्होंने मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में, उन्होंने 3 डायग्राम ना बना करके सिर्फ कौन सा डायग्राम बना लिया? एक बनाने के बाद उसमें क्या दिखा दिया? जहाँ इंटरसेक्शन आ गया उसको दिखा दिया नॉर्मल प्रॉफिट. ये वाला एरिया हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, और इससे पहले वाले एरिया में यहाँ लॉस है. इट इज इनकरेक्ट. ये डायग्राम सिर्फ एक ही चीज को शो कर रहा है, दैट इज सुपर नॉर्मल. Because quantity will be determined where MR is equal to MC. You can't violate that condition. We are discussing about the equilibrium. So equilibrium condition को satisfy करना है. Equilibrium condition satisfied only at one point. So you have to, in order to answer it, we have to draw 3 separate diagram. 3 separate diagram draw करने. ठीक है? तो just add, इसको आपको आंसर के फॉर्मेट में सेपरेट लिखना है. ये तो डायग्राम की बात होगी. अब पेपर के अंदर ऑब्वियसली यू कांट जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. To give the reason बताएंगे कि why despite loss firm will operate. Give out the reason. Explanation ऐड करना है इसके अंदर. 10 मार्क का क्वेश्चन था. इकोनॉमिक्स सर्विस में ये 5 मार्क का था, और ऑप्शन में कंपल्सरी क्वेश्चन में था 10 मार्क्स के क्वेश्चन में. बट 10 में इफ यू वांट टू स्कोर 6 और 6.5 ज्यादा स्कोर अगर करना है तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट. सिर्फ डायग्राम बना देंगे वो तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी. आउट ऑफ 10 यू मे गेट 3, 4 एंड सो ऑन. If you want 6 or more than 6, question is yes, you can score it provided you write effectively. ठीक है? So just a few basic points here. Without using average cost curve, without using average cost curve, without using average cost curve, we can explain or show normal profit, supernormal profit, or loss by using
TR and TC approach by using total revenue and total cost approach. By using TR and TC approach. Next paragraph. When total cost will be, when total cost curve will be, when total cost curve will be tangent on total revenue, when total cost curve will be tangent on total revenue, then there will be only normal profit. There will be only normal profit. So since market is perfectly competitive, since market is perfectly competitive, market is perfectly competitive, and firms are price taker, and firms are price taker. So total revenue line is a straight line. Total revenue line is a straight line. Let me just explain the reason why you have drawn this line straight. Total revenue line is a straight line. On the other hand, total cost curve, total cost curve, total cost curve is inverted S in shape. Total cost curve is inverted S in shape due to law of diminishing return. Due to law of diminishing return. Due to law of diminishing return. Next paragraph. When total cost is less than total revenue, when total cost is less than total revenue, at equilibrium quantity, when total cost is less than total revenue at equilibrium quantity, then there will be supernormal profit. There will be supernormal profit. Within bracket just mention diagram 2 or as shown in diagram 2. Diagram को explain नहीं करना है. As shown in diagram 2. You have shown that supernormal profit here. Next paragraph. In short run, there could be loss. In short run, there could be loss if total revenue is less than, total variable cost, or total cost. If total revenue is less than total cost. If total revenue is less than total cost. But despite loss, firm may continue to operate. Despite loss, firm may continue to operate. Firm may continue to operate. If total revenue is greater than total variable cost, is greater than total variable cost, so that firm earns supernormal profit. So that firm earns supernormal profit. So that firm earns operating profit. So that firm earns operating profit. Bracket में diagram 3. ठीक है, we have shown that outcome in third diagram.
all three diagram and this description for that 5 marker or 10 marker question. शटडाउन का केस हम अज्यूम करते हैं कि फर्म ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए कंडीशन दिखा रहे हैं. शटडाउन का केस दिखाना है तो उसमें क्या करेंगे, जो टीवीसी है उसको टेंजेंट कर देना. जैसे नॉर्मल प्रॉफिट में टीसी टेंजेंट किया था, शटडाउन में टीवीसी टीआरपी क्या कर देंगे, टेंजेंट कर देंगे, तो शटडाउन का अमाउंट आ गया. सी दिस इज वन अप्रोच. द ऑल्टरनेट अप्रोच is a MR and MC approach. So from the first approach that was a question. The second approach is in fact MR MC approach. When you are showing the MR MC approach, same thing can be shown with MR MC approach. In this MR MC approach, now you can draw the diagram for market and for a firm. For market, demand supply intersection, determine the price. So price will become the marginal revenue. Now here you can use that average cost, because without average we can't show the profit. So if you draw the average cost curve, that average cost curve is U-shaped. Okay, ये जब प्रोडक्शन कॉस्ट करेंगे तो रीजन में क्लियर हो जाएगा कि why you draw average cost curve U-shaped. Remember, if you draw average cost above, तो लॉस हो जाएगा. If you just draw it tangent, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. And if you show it below, then it is supernormal. So start first of all with the supernormal. From the minimum point of average cost, from the minimum point of average cost, you draw the marginal cost line. And what is the profit maximizing condition? Firm का profit maximize होगा when MR equal to MC means the intersection of MR and MC. This will determine the quantity. Average cost किसी भी position पे भी ड्रॉ करो. MR equal to MC will determine the quantity. Mark this point first. From there you can determine the quantity. Price already determined the market. So can you identify the total revenue area here? What is total revenue? Price into quantity. This is price and this is quantity. Multiply, you will get the area of this rectangle. This is your price, this is your quantity. So mark these numbers as M and it is O, P star, M, Q star. Clear? How much is the total cost? How to find total cost? Total तो draw नहीं किया, we have drawn the average. तो total cost के लिए I said average cost into quantity कर देंगे. So quantity you know, Q star. How much is average cost? For this Q star average cost is determined by this n point. So, n point से मार्क करेंगे इधर, ये एरिया आ जाएगा. So mark this as R. So this will become area O R N Q star. So revenue area is this larger rectangle, cost area is the smaller rectangle. So revenue minus cost will be this space. This area show supernormal profit. यहाँ पे ये एरिया सुपरनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है. तो देयर रिमेंबर टू डिफरेंट अप्रोच. एक अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया, टीआरटीसी अप्रोच से क्वेश्चन पूछा गया था, बट दिस इज द एमआरएमसी अप्रोच. अब मैंने आपको एक मेथड बताया, कैन यू ड्रॉ द रिमेनिंग टू. एक फर्स्ट ड्रॉ इट फॉर द लॉस के लिए दिखाना है. This is for the supernormal profit.
remain into Q and both rectangular area by supernormal profit. ये रेक्टेंगल क्या है, सुपर प्रॉफिट है जो शेड किया। रेवेन्यू ये पूरा एरिया हो गया कंप्लीट, कॉस्ट का एरिया ये हो गया, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दिया, जो गैप बच गया वो। सेकेंड, ड्रॉ इट, शो इट फॉर लॉस। और loss, if you have to show again, there will be two part of the description. For market you can take supply demand, if there will be loss then obviously average cost must be above it. Clear? First thing is that, but your variable must be lower, so draw the variable cost below it, and the gap between these two must reduce, and passing through the minimum of both, draw the marginal cost line, and then again apply the equilibrium condition, which is MR equal to MC. Intersection of MR and MC, mark this point first. From here you determine the quantity. MR equal to MC here, so mark this quantity. Price already determined. Which area is revenue area now? P into quantity, so this area is the revenue area, which is this cost area. For cost you have to multiply quantity with average cost. For the same quantity average cost is above, so for average cost we take this. So now this space is loss, but in loss firm is operating because firm is having operating profit. Which area is operating profit? Operating profit is the gap between revenue and variable cost only. So for variable cost we determine this point. This is a variable cost point. This one. This green one is for operating profit. This blue one for loss. And in the case of normal profit, what you will do? For supernormal, it was drawn below. For loss, average cost was drawn above. For the normal, it will be only, you can take the third as only tangency point. So from this basic section, one question you have done, जो पेपर के अंदर आ रखा। Now, description of it you have already written up front. So there are, remember, two approaches. One approach is TRTC approach, another is MRMC approach.
and why equality of MR and MC is necessary. You have written that content upfront. Basic 1 में हमने लिख रखा. If MR and MC are not equal, then what will happen? क्रॉस में क्यों ऑपरेट करते हैं उसके लॉजिक भी आपने लिख रखे. तो वहां का कंटेंट है. इनकेस अगर MR MC अप्रोच आता है तो ये 3 डायग्राम यूज करेंगे. विदाउट यूजिंग एवरेज कॉस्ट जैसे क्वेश्चन में पूछा गया तो TRTC अप्रोच करना है. ठीक है. अब बाई यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन ऐड वन मोर फॉर दिस लेक्चर, and with that you can attempt one more question, and now we can attempt this question. Question number 16. Again it says under competition. So question is for the perfect competition. The cost function is given as C is equal to y square plus 1, where y is output. जैसे quantity Q से denote करते हैं, यहाँ y से denoted है. I said in the basic concept, if any cost does not depend upon quantity, then it is fixed. And if any cost depend upon quantity, then it is variable. That means y square is variable cost and 1 is fixed cost. Cost का equation दिया हुआ है. Derive the inverse supply curve and show how supply curve looks like. मतलब आपको supply curve का equation लिख देना है and how supply curve looks like. That means you have to draw it, plot करनी है. Now this concept actually this question actually require one concept, that under perfect competition marginal cost curve is the supply curve. And why I call marginal cost curve as the supply curve? First explain that, then you can answer this question. In your register, just write down the heading. Why marginal cost curve is supply curve of firm in short run. Why marginal cost curve is supply curve of firm under perfect competition. Why marginal cost curve is supply curve of firm under perfect competition in short run. I repeat, why marginal cost curve is supply curve of firm under perfect competition in short run. ठीक है, अब देखें. Whenever I say supply curve, then supply curve is supposed to explain what? Relation between price and quantity supplied. That means if I am able to establish a relation that at price P1, quantity supplied is Q1. तो P1 और Q1 को plot कर सकते हैं. I get 1 point. At price P2, supply will be Q2. Then I can mark the second point. And by joining those points, I can get the supply curve. Supply curve explain relation between price and quantity supplied. जरा इसको perfect competition में relate करो. ध्यान देना. I've drawn one diagram, second and third. This first one is for the market, second is for firm, third also for firm. Price is determined in the market by the market forces. Deliberately I am taking it above. यहां से पहले मैंने प्राइस मार्क कर लिया. I get a particular price. Price itself is a marginal revenue line. ठीक है. Now I have drawn the average cost curve, and below it you know it is average variable cost curve, and passing through the minimum of both will be the marginal cost line. So given this price, if I mark this price as a P3, given this price, how much quantity will be supplied by the firm? Remember, firm will always supply that much quantity where its profit get maximized. And profit maximization condition, you know, MR equal to, so MC MR का intersection देखना है. So at price P3, how much quantity will be supplied? If I mark it Q3, so now
You can simply say that at price P3, firm will supply quantity Q3. I get 1 point here. Now, if firm will supply this quantity, whether firm is having profit or loss, ग्राफ को देख के बताइए. इस प्राइस पे अगर ये क्वांटिटी सेल करते हैं तो फर्म इज हैविंग प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट है बिकॉज रेवेन्यू इज मोर देन द कॉस्ट, तो फर्म इज हैविंग प्रॉफिट. नाउ if price is not P3, suppose I take a price lower than P3, ये मार्क किया हुआ P3, I'm taking a price P2, it could be because अगर मान लिया सप्लाई कर्व यहाँ पोजीशन ना होकर क्या होता, अगर ये सप्लाई कर्व का पोजीशन मैंने राइट साइड ले रखा होता तो यहां से प्राइस मार्क हो जाता. फिर I'm deliberately taking it in between what? In between average cost and variable cost. So if price is P2, then your MR will be this. How much quantity now? Again apply same condition. MR equal to MC is now satisfied here. So you mark quantity Q2. Now answer one thing. When firm produces quantity Q2 and it is selling at price P2, firm is having profit or loss? Loss, because average cost is above. Now, even if the firm is having loss, firm will operate or shut down? Operate, because जो price आ रहा है वो variable cost से तो ज़्यादा है, so firm will not shut down, firm will operate, means firm will supply this quantity. So at price P2, firm will supply quantity Q2. But if somehow, if the price reduces further and price is now equal to the minimum of ABC, price is say P1, then what will happen? Price और कम होता जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट will get reduced. So now if it is at the passing through the minimum point, you can say this quantity is Q1. So at quantity Q1 and price P1, firm is having zero operating profit. Operating profit भी zero हो गया. So this point is called as the shutdown point and this is the shutdown price, which means any price lower than P1, what will happen? No profit, no production, no supply. Supply का does not exist below P1. P1 के नीचे supply का exist नहीं करता. So generally we say marginal cost का भी the supply का, because if you mark this point, 1 point, 2nd point, 3rd point, then it is basically coinciding with which line? So you call marginal cost curve the supply curve, but it is not the complete marginal cost curve. It is only that part of marginal cost curve which is above the average variable cost curve. It is not the complete MC. Only that section of marginal cost curve which is above the average variable cost curve. Only that part is called as the supply curve. So if you plot it at P1 पे ये पॉइंट आ जाएगा Q1. तो एक्चुअल में जब आप सप्लाई का मार्क करेंगे तो सप्लाई का पोजीशन ये हो जाएगा स्टार्टिंग दीज पॉइंट्स, और बिलो P1 क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब सप्लाई जीरो है. तो हाउ टू प्लॉट? बिलो P1 क्वांटिटी विल रिमेन जीरो. Below P1 quantity remaining zero means it is coinciding with the vertical axis. ये zero. और P1 or above P1 supply will be coinciding with the marginal cost curve. That is why we call marginal cost curve the supply curve. But it is not the complete marginal cost curve. It is only that part of MC which is above the average variable cost curve. This concept you have to apply to answer that question. उस क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है. ठीक है, पहले ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट.
Deliberately just take three prices, one in between AC and ABC, one above it and one below it. Just add a paragraph. अरे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं. इट्स नॉट बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन. इधर 5 मार्क में इकोनॉमी सर्विस में कंपल्सरी में या 10 मार्क्स में इकोनॉमी सर्विस में कंपल्सरी में क्वेश्चन आए हुए हैं. So obviously you can start by defining the term supply curve and then explain why MC is the supply curve. Why not complete MC is supply curve. Right, and first supply curve explains relationship between supply curve explains relationship between price and quantity supplied. Relationship between price and quantity supplied. Price and quantity supplied. Under perfect competition, marginal cost curve is supply curve of firm. Under perfect competition, marginal cost curve is supply curve of firm in short run. Supply curve of firm in short run. But it is not the complete marginal cost curve. But it is not the entire marginal cost curve. It is not the entire marginal cost curve. In fact, it is only that part of marginal cost curve. In fact, it is only that part of marginal cost curve, which is above the average variable cost. Which is above the average variable cost. Which is above the average variable cost. This is because when MC is less than ABC, then equating price with marginal cost, price actual में हमारे equating price with marginal cost imply that price will be less than ABC. It means there will be operating loss. Therefore,
that part of marginal cost, which is below ABC, that part of marginal cost which is below ABC is not part of supply curve, is not part of supply curve, is not part of supply curve. तो इनफैक्ट आप ये सेक्शन छोड़ देते हैं, सप्लाई कर्व का ये पार्ट आपको रिमूव कर देना, दिस वन सप्लाई मार्जिन कॉस्ट सप्लाई कर्व है बट नॉट दिस वन, ओनली अबव इट। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। स्मार्ट PYQ ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है 2019 का। Under competition, the cost function is given as C equal to y square plus 1, where y is the output. Derive the inverse supply curve and show how supply curve looks like. मतलब आपको प्लॉट कर देना उसे। तो cost function given as C equal to y square plus y. Just a small, this is a remember ये cost का function given है which is y square plus 1. You can call this as the variable cost and this as fixed cost. ये total cost का equation given है. This is a total cost equation given. I know that marginal cost का भी the supply curve. And supply curve explain what? Relation between price and quantity supplied. So from this total cost you have to calculate what? Marginal. Total cost से क्या निकाल लिया? मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। वन कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव 0 हो गया और y स्क्वायर का सिंपल डेरिवेशन 2y, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो 2y will become the marginal cost and we know that supply curve is marginal cost curve, so we write P equal to MC, or in place of MC you write 2y. तो इक्वेशन में प्राइस और क्वांटिटी आ गई। अप्लाई कर एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी। कैन यू प्लॉट दिस प्राइस एंड क्वांटिटी? यहाँ पे आपको प्राइस लेना है और यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वाई यहाँ पे है, ठीक है। सो इफ आई टेक y1 व्हाट विल बी P? 2. इफ आई टेक y1 price will be 2, you get 1 point. If you take y2 then quantity will be 4. So what will be the relation actually? Linear relation है, straight line होगी, 1 2 2 4 3 6 and so on. So just draw a straight line. Supply curve looks like this. This is the marginal cost line. आपको ये प्लॉट करना है बस 2y को, y1 हो गया MC2 हो जाएगा, y2 MC4, y3 MC6. So draw the straight line. And I said which part of MC supply curve? Above the ABC. So how much is ABC here? Can you find how much is ABC here? I said variable cost is y square. ये total है. If total variable cost is y square, therefore average variable cost is total variable cost upon quantity, which means y square upon y, that is y. ABC is y, y means if y is 1, variable cost 1, if y is 2, variable cost 2, if y is 3, variable cost 3. How to plot? 1 1 2 2 3 3, प्लॉटिंग कहाँ पे हो जाएगी? वो भी स्ट्रेट लाइन है बट 1 के साथ 1 आना है, which means you will have this point. 2 के साथ 2 आएगा, इधर का पॉइंट आएगा. If you can draw the average variable cost, again it will be a straight line but lower. This is your ABC. I said which part of MC supply curve? Which part of MC supply curve? That part of MC which is above the ABC. In this example, all entire MC is above the ABC. तो entire MC supply curve हो गया.
इस क्वेश्चन में तो इंटायर एमसी सप्लाई कब है, बिकॉज एबीसी तो थ्रू आउट लोअर है। तो दिस इज योर marginal cost itself is the supply curve. Supply curve looks like this. ठीक है, supply curve actually looks like, now what is the meaning of that inverse supply curve? What is the inverse? Actually you have written inverse ही लिखा है हमने, कुछ नहीं करना है इसमें। what is direct and what is inverse here? क्वेश्चन लिखने के दो तरीके होते हैं, I can write p equal to 2y or y equal to p by 2. If you write p equal to 2y, it means price is a function of output. I can write the inverse other way also. Output is a function of price. So when you write p as a function of output, it is inverse. Normally, how we write demand function? Demand as a function of price. I'm saying inverse. Price as a function of demand. Clear? So it is written as p equal to this. This itself is inverse. इसका डायरेक्ट क्या हो गया? y equal to p by 2. प्लॉटिंग तो सेम रहनी है, ग्राफ तो ही रहेगा। क्वेश्चन है, दिस इज योर इनवर्स सप्लाई कर्व। So only that short basic concept was required and you can handle this question. अब आपको करना कि एक्चुअली जस्ट कीप अ सेपरेट स्पाइरल। सेपरेट स्पाइरल में जो भी क्वेश्चन आप लिखते हो यहाँ रहे हो, बट स्टिल उसे सेपरेट स्पाइरल में, जैसे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, ट्राई टू प्रेजेंट इन दैट वे। एवरी डे इफ यू राइट 2 or 3 आंसर, तो पास्ट के क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, और वो अपने आप में एक जो भी वॉल्यूम आप स्पाइरल मेंटेन करोगे, दैट विल बिकम एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बिकॉज उसमें सारे पास्ट के क्वेश्चन मोस्टली आ जाएंगे। तो वो एक प्रैक्टिस आपने अभी प्रोसेसिंग अभी कर ली, यहाँ लिख लिया है, और वहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके इसको एक्सप्लेन करोगे। जस्ट डेवलप दैट हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर, बिकॉज आंसर राइटिंग इज की। समझ गए, वो बात सेपरेट होगी, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, और व्हाट इज रिक्वायर्ड देयर इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन। प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन वो डेवलप होगा, इट विल टेक सम टाइम। अदरवाइज व्हाट यू विल बी डूइंग, यू मे बी जस्ट मेंशनिंग द फैक्ट, इलेबोरेशन लैकिंग करेगा। यू हैव टू इलेबोरेट दोस कांसेप्ट। मान अज्यूम करो कि वो 10 मार्क्स के 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड ट्राई टू इलेबोरेट एज मच यूज कैन। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड बेसिकली विद दिस market structure topic, and in the market structure topic we are basically doing the perfect competition form. तो हमने बेसिक करा है, और परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व विद द मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व, और मोर टॉपिक है देयर व्हिच इज अ इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ फर्म। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस सेपरेट आ रखा है, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, कांस्टेंट इंडस्ट्री में क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होगा। So one more for this industry supply curve, and then we move to the important topic in terms of the question. So first from perfect competition we move to oligopoly, then we go to monopolistic, and then monopoly. That will be the order basically ये रहेगा क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये सब PDF अपलोडेड है आपके साइट पे, इसको डाउनलोड करके अपने पास एक मेंटेन रखोगे। एंड प्रेफरेबली व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर मेंटेनिंग अ सेपरेट स्पाइरल फॉर माइक्रो, तो माइक्रो के जो क्वेश्चन है 2-3 पेजेस, वो प्रिंट करके अगर आप उसको रजिस्टर में रखो तो इट विल बी बेटर। क्वेश्चन उसी स्पाइरल में होगा, जब कभी रेफर करना होगा इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, वो इजी रहेगा। वेलफेयर जहाँ स्टार्ट किया, वेलफेयर के क्वेश्चन वहाँ पेस्ट कर दिए, डिस्क्रिप्शन आपके नोट्स में आ जाएगा, और पास के क्वेश्चन उसके साथ रहेगा। ठीक है, इट विल सेव सम टाइम, पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन से पहले, बिकॉज गैप रहते नहीं, इकोनॉमिक सर्विस में कोई भी गैप नहीं मिलता आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे बैक टू बैक एग्जाम देने होते हैं। तो अगर पहले से अरेंज करके रखेंगे तो इट विल सेव सम टाइम। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास के लिए इनफ है, विल कंटिन्यू विथ परफेक्ट कंपटीशन रिमेनिंग एंड ओलिगोपोली टुमारो। ठीक है, एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑनलाइन, अगर किसी को कोई कंसर्न है, डाउट है, तो कॉल करके पूछ सकते हैं। रेलिवेंट कंक्लूजन का स्पेस है ही नहीं, इसमें क्या कंक्लूजन है, कोई लेंदी क्वेश्चन हो तो ये तो फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है।